He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him, and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Manash Mishra. नमस्ते शु महामाये त्रिपीठे सूरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मोलया पद्मोकरा पद्मपत्र निवेक्षणा वंदे पद्ममुखीं देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलकारिणी देवी सर्वदुःख विनाशिनी दारिद्र्य विध्वंसनाय देवी सकल काम प्रदायनी सर्व मनोकामना पूर्णं देवी कमलस्थिते विष्णु हृदये वासिनी श्री महालक्ष्मी देवीभ्यो आगच्छन्तु इह मम हृदये स्थिरमस्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अहम ब्रह्मास्मि। Good morning everyone and good evening to the people from other part of the world. आप सभी को धनतेरस की या ये तृतीया तिथि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में
हमेशा सुख, शांति, उपलब्धि और समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आज का ये सत्संग शुरू करेंगे. So the main things that we will be covering today through this satsang is the first, as Kamlender ji has invoked the different kinds of asanas. That's one thing that we'll be talking. Second thing, as Revati ji asked, like what should be done on Dhanteras. So I'll be giving one process for Dhanteras. Then there will be another process, another two processes that whichever if you like, you can do it at your home because it's very easy. And then I don't know what else I can give you on this day. It all depends on how much you are able to take. आप कितना ले सकते हो उसके ऊपर है, क्योंकि the day, that auspiciousness, it always begins with like how well you are able to give. It's not how well you are able to take. So here the only thing that you have to do is घर के दरवाजे खुले हो ना हो, मन के दरवाजे जरूर खुले रखना. Whether the doors are open or not, your heart should be open, right? So shall we begin with the asanas first? उसके बाद मुझे याद दिलाइए. I will be telling you at least 3 processes today, so that some people get rich, or all of us, however you think it, not just in wealth, health, prosperity, relationships. That's more important, I believe. पैसे कमा लोगे, रिश्ते नहीं कमा पाएंगे. And more than that, realizing your true self. That's real wealth. Because anyways, whatever relationship you maintained or not, किसी के साथ क्या हुआ, what will happen is anyways you will drop it here only. So the first and foremost thing that you need is a relationship with you. What kind of relationship you have with your own self, that's more important. So let us create that prosperity within our own selves first. अपने अंदर वो पहले जगाते हैं, so that whoever comes in contact with us or in our surrounding, everyone is blessed by our presence. So with this, we will begin by the asanas. It is जैसे हम, I just want to clarify, because when we speak of asanas, people think about yoga asanas. No, I'm not talking about the yoga asanas. I'm specifically talking about the mat that you use to sit. And it has a very, very too much of importance actually. Why and what kind of mats will be used and what kind of mats are not used. So as usual, I'll be speaking both, trying to speak my best in Hindi as well as in English, so that all the people out there can understand that part. Whenever we do any sadhana, जब हम साधना करते हैं ना, उसमें आसन का बड़ा महत्व क्यों है? What's the so specific about those mats? Because I have seen many people, they say, how does it matter? कहीं पे भी बैठ जाओ. But you must have seen certain things. When you see Brahma, he also sits on a asana, a lotus. Have you seen any god sitting on the floor, on the ground, any time? What does that indicate? That there is an importance of the place where you are sitting. Brahma is sitting on the lotus. Then you say, where is Vishnu? Vishnu is lying down on the snake. Then when we look at Shiva, he's sitting on a Baghambar, means he's wearing a tiger skin as well as sitting on a tiger skin.
what is that indication about that? उसकी व्याख्या बहुत अलग से करूंगा, so that everybody gets that why people have been asking why Shiva wears tiger skin. Shiva didn't wear anything, you only put around it. वो पहले ही दिगंबर है, वो उसको बाघंबर बनाने वाले हम लोग ही हैं. Whatever it is. So जैसे I was talking about these asanas, जितने भी सिद्ध हुए नाथों परंपराओं से, स्पेशली आई विल स्पीक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द नाथ संप्रदाय, because they have been a very very proven siddhas in that lineage. वो पूरे के पूरे जितने हुए नाथ संप्रदाय में सब सिद्ध हुए हैं. So that would be a great reference point to look at, so that everybody, we don't need to go and verify whether that works or not. जो जो चीजों को उन्होंने प्रेस्क्राइब किया, इट्स जस्ट लाइक ए प्रूवन डॉक्टर फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज. वी हैव स्पेशलिस्ट्स, राइट? सो नाथ संप्रदाय सिद्ध में प्रसिद्ध है पूरे. मीन्स एवरी वन ऑफ देम गॉट सो मच ऑफ सिद्धीज, एंड it is said like they are directly also somewhere taught by Shiva itself. So whatever they have spoken has also come from the mouth of Shiva only. Although those are not agamas, because what we call as agamas are the things that Shiva spoke directly. Especially जो संवाद हुए पार्वती और उनके बीच में, वो सारे संवाद को हम वो नाम से जानते हैं, आगम के नाम से जानते हैं. जो वेदास हैं उनको हम निगम के नाम से जानते हैं. बट हियर दिस इज नॉट कमिंग डायरेक्टली, बट इट इज कमिंग थ्रू द सिद्धनाथस. तो सिद्धनाथ के परंपराओं में whatever they prescribed about the asanas, they say that whether it is a regular karma kand that you do, there also is a importance of it. अगर आप दक्षिण मार्ग की पूजा करते हो तब भी, जब आप वाम मार्ग की पूजा करते हो तब भी, जब आप सात्विक पूजा करते हो देन ऑल्सो यू नीड ए मैट, जब आप राजसिक या तामसिक पूजा भी करते हो उसके लिए भी एक आसन बेहद जरूरी है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाई? वन स्पेसिफिक थिंग इज the earth has a very typical quality of pulling. Gurutwakarshan, gravity. So quality of the earth, what we experience as gravity, is not only the only one thing. Now this might shock you. The earth not only gets the energy from the sun, it's also you. Because we all know that whenever we are starting to do certain processes, even a normal person, everybody has a connection with the cosmos. If you say no, then what do you do when you sleep? You are actually connecting back to the cosmos. And if you don't sleep for 10 days, what will happen? Kusha? नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरे जैसे हो जाओगे, और क्या होगा? No, people will go mad in that space if you are not able to sleep for that long. And majority of the, you see, any mental disorders that people have, that's all because of not having sleep. Right, Rajan ji? सही मात्रा में निद्रा नहीं हुई तो पागल हो जाते हैं लोग. So, in this case, what I'm saying is there is a connection between you, and it is not that you are not getting it without meditation. You are getting it, but it is just in a chunk. But when you meditate, how many of you have already experienced something like, okay, I feel more energetic when I meditate. I feel happy when I'm meditating. This is a very common thing that every one of us have experienced. What's the reason? The reason is we are now channelizing our entire focus. It's like the antenna. Antenna kahin pe bhi ghumta hai, and it is just catching some or other stations, and you are just getting that relayed in your house. But now you are particularly focusing to a particular area, particular zone, and now it is catching all the power. Which is better?
So meditation is again like becoming kind of an antenna which catches up the cosmic rays or the cosmic energy that flows in this world. However, when this cosmic energy flows, it has to go down somewhere. Where does it go? Or else you would have bursted with energy by now. That much energy, even if by little also drop by drop bhi aata hai na. So by this time, Santoshi ji, we would have been filled with that, even droplets, because that many years we have been on this planet. Then where is it going? Have you ever realized? It is absorbed into the earth. Is it bad? No, it is not bad. It helps you maintain a balance. Whatever is required, it is utilized by your body. Whatever is not, it goes away. However, have you seen certain rishis, munis, yogis? They wear a wooden sandal. Kathau jise kehte ho. Why do they wear that? Long time back, I talked in this some session, I believe, that you might just, if I give you a process, you might start getting shocks in your legs. आप धरती पे चलोगे और आपको करंट लगेगा. And it will not in the entire leg. I can particularly mention where you will feel it. Because then you will realize, okay, so this current is going here and I was not aware of it. So they use those wooden sandals so that it becomes a, what do you call that, Mrudu? Insulators. Okay. So that the energy is not flowing into that space. So they are able to contain that energy. But the problem here is when we generally get that, what we do is it gets accumulated, not utilized. But what the yogis do is the same energy that is going inside, going down, they just turn it around towards the upwards movement. वो ऊपर के movement के तरफ उसे जगा देते हैं, so that what happens, that helps them into awakening their kundalini. So that is one thing. Now, without, why do they say like you should walk on a floor, grass or something? It's a way of giving gratitude as well. Now you never know that part, that walking can be a gratitude. A gratitude towards what? A gratitude towards the place where you are living. And if you are a good energy, you should pass on some good energy to the field where you stay. इसलिए मंदिर भी जब जाते हो ना, you see why in temples you are not allowed to wear the chappals, because that energy is much more better than what you are carrying. It is sanctified. वहां पे ऊर्जा बहुत अच्छी है. So rather than giving, you can become a person who is actually taking from that space. Energy always flows from higher to lower. So whichever energy field you are. Some days you might have seen like you meet some people or you talk to some people or you just see something and you are so down on that day. कहते नजर लग गई. No, that's not about nazar lagna. That's about the energy that influenced you. That energy was more powerful than your energy in that moment. And might be it was not that great energy. That's it. Not only that. Very typical thing. You remember earlier days, whenever somebody comes to our home, there used to be always a wash area outside the house. पहले पैर धोना फिर घर के अंदर आना. अभी है क्या? अभी इसीलिए देखो, जो ऊर्जा है आ गई. Any energy comes. How do we choose not to be the negative energy? Okay, बताता हूँ. See, many a times, have you seen like when you walk on a particular place, let's say you are walking on a wet sand, are there footprints of yours or not? बनते हैं ना? There is one thing called as footprints
there is another thing called as energy prints. Footprints, we can see that. Energy prints, we cannot. So many a times when we are walking on the streets, how do I know on whose footprint I kept my feet on? कौन से ऊर्जा के ऊपर मैंने कदम रख लिया, मुझे कैसे पता? And Vani ji, there was a place when once Ram took to Lakshman, Ram ne Lakshman ko leke gaye. Ram took Lakshman to that place and he said, Lakshman, I'm sitting here. You do one thing, go there and bring some water for me. I want to drink some water. I'm very thirsty. Just go and bring some water. Lakshman, as always, ready to do seva of Ram, ran, bhag ke jata hai. But the moment he reaches near that place where the water is, he stops and he starts thinking, ये हमेशा मुझे ऑर्डर देता रहता है. What's the first thing that came into his mind? What is this? He's always giving me orders. What am I, his servant or what? He says, I'll not do that work today. He returns back. But the moment he's coming nearer and nearer to Ram, he says, what am I doing? What am I doing here? Again goes back. Again the same story. The moment he reaches that water level, तो पानी के पास जैसे ही जाता है, उसके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं, मैं क्यों करूं? इसका नौकर हूं क्या? रोज उधर बैठा है, खुद आके पानी नहीं पी सकता. Again turns back, and the moment he is coming again nearer to Ram, he says, मैं क्या सोच रहा हूं? How can I think about something like that with Ram? But literally Ram sees he coming, going and forth and coming back. Ram says, come here now. He said, what happened? He said, I don't know what's happening. Whenever I'm going there, I'm feeling like this. He said, that's why I sent you there, so that you realize what is there. And then Lakshman says, why is that? Now that is a place where two Rakshasas sat and did their yajnas for a long time. And their energy is still reverberating in that space. So whenever you are going into that space, you are having that kind of thoughts. Are you getting that? उस जगह की ऊर्जा वैसी है कि जहां जाने से आपका मस्तिष्क घूमने लगता है. That's okay. That's about the place outside. What about the place within? हमारे अंदर भी राक्षस हैं. We also must be having demonic things within our own selves. And we might have also created such a space. Look into yourself, you will find it. There is such a space, there is such a situation, there is such a person. Whenever you think or you go into that space, even in your thoughts, you become irritated. Yes or no? Have you experienced it? Everyone. That means there is a place that needs to be cleared. वो ऊर्जा को हमने अपने अंदर नहीं बदला, इसलिए वो ऐसा जगह है, हम जहां जब भी उस जगह पे जाते हैं, we feel like that. And every one of us has a dipping point. I just press that one switch and you are gone. You might be sage-like, but in that moment you become the most irritated person. Anybody not in this space? Everyone. That means, why am I indicating this story and why am I indicating this to you? I'm indicating this to you because Diwali is not just burning diyas, it's also burning down those places that is actually killing you from within. Get relief from those places. Because if you keep on getting yourself attached to that space, it will always keep on bringing tears into your eyes. It will always pull you down. It will always keep you somewhere. But what is the ultimate goal of us? क्या करना चाहते हैं? We want to come out of this space. And you know what Ram did at that time? Ram asked
Lakshman to collect and gather some woods, and he collected and put it there, and Ram did a small puja kind of thing there in order to change that space. So we are also doing so many jobs, mantras and everything, right? What's that? That's also more than just elevating you. It's also clearing and cutting down the things that is holding you back, right? So about the asanas, when you are doing your puja and siddhi, you are also creating energy field. So just so that that energy is not just getting absorbed into the earth, you need a asana. Okay. So I'll just come back, because if I go into that space, means again it would be a long talk. So as we started last time, नाथ सिद्धों के योग मार्ग में, लाइक कर्म कांड के मार्ग में भी, there is a process in which they say you should sit on the kush asan. कुशासन जो अभी हरिभाई ने last time even he showed it on the screen. So कुशासन का जो बहुत महत्व है, because it is used to give ज्ञान, मतलब ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा है. जैसे हमने कहा था कि सरस्वती की पूजा के लिए, लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत उपयोगी होता है वो. And then also I said, like, if you put a cotton cloth on that, it also gives you more energy and power because it is conducive to that. ये दो चीजों के बारे में तो हमने बात किया था, कुछ आसन के बारे में और उसके ऊपर जो कपड़ा रखना है, राइट कमलेंद्र जी? सो विल मूव अहेड विथ अदर काइंड ऑफ आसनस. कौन से आसन यूज करने चाहिए, कौन से आसन यूज नहीं करने चाहिए, और उसको यूज करने से होता क्या है. What do you really get out of using it? Because the ultimate question always, Sudhaji, is what? मुझे क्या मिलेगा? Because our mind never works without a motivation. That's what we even talked. जब आभा जी ने हमको पूछा था वेडनेसडे के दिन, सब हमने ये बात किया था. So बड़े ध्यान से सुन लो. किसी दिन somebody comes and asks you, and why are you sitting on this asana and doing this? At least you will having an answer for them, because questions are always asked by those who have never used it. सवाल हमेशा वही पूछते हैं जिन्होंने उसके बारे में कुछ जाना नहीं, खुद ने किया नहीं, and they are the most avid people asking the questions. See, हरिभाई also is showing, ये है कुश का आसन. ये आप इजीली आपको अभी नहीं बोल सकता, मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा. ओके, सो द नेक्स्ट. So next asana that we will be taking, कंबल, the woolen one. कंबल के आसन पे अगर आप बैठते हो तो मनोकामना सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है. So it is all related to your desires, wishes. अगर आप उसके ऊपर बैठ के करते हो तो that works very well. So कुश का आसन, उसके ऊपर कंबल या कॉटन का आसन बहुत ही शुद्ध, पवित्र और सिद्धि प्राप्ति करने वाला चीज देता है. So you can use that. That would be very good. इसीलिए कहते हैं कि ये अगर आप यूज करते हो दिस कुश आसन एंड उसके ऊपर कंबल या कुछ, अत्यंत शुद्ध, पवित्र एवं सात्विक गुण संपन्न है. ये सात्विकता का परिभाषा करते हैं. सो वेन एवर यू आर डूइंग द सात्विक पूजास, दिस इज वेरी गुड. एंड द अदर आसनस दैट आई एम गोइंग टू स्पीक राइट नाउ, इन आसनों पर जो भी साधना, मंत्र जाप, तंत्र मंत्र या कोई सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आप अगर कोई भी कार्य करते हो, यू डू एनी काइंड ऑफ साधनास, वो चाहे फिर पूजा, कर्मकांड, उपासना, योगिक साधना, ये सारे चीजों को करने से आपको ज्ञान, सिद्धियां, सात्विक गुणों की प्राप्ति हो जाती है कुछ सात्विक आसनों के जरिए.
And one thing that I want to say is that day, even Kamlender ji asked like, why we should not be sharing our asanas with anyone. So we talked about the energy because of which it can have an impact on us. और एक चीज, one very very important thing that it is about this is, आप ही का जो आसन है, if you keep on being there, इन आसनों पर देवी देवता, सिद्धों की, ऋषि मुनि, इनके साक्षात्कार दर्शन हो सकते हैं. उसका विशिष्ट समय होता है, विशिष्ट मंत्र होते हैं, और कुछ मंत्र ऐसे हैं जो अगर आप 41 डेज जाप करते हो तो आपकी मंत्र सिद्धि हो जाती है. एंड दोज आर वेरी पर्टिकुलर थिंग, माइट बी वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपकी एक क्या कहते हैं, पात्रता होनी चाहिए. दूसरा, उपयोगिता होनी चाहिए. मीन्स यू शुड बी रेडी फॉर दैट and you should know why you want it, not just pouring everything on you, right? और एक साधना होता है 1.25 साल का, और ये साधना करने पर ज्ञान, कैवल्य, वो जो आनंद की स्थिति है उसे प्राप्ति की जा सकती है. लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर द पीपल जो गृहस्थ हैं. द पीपल लिविंग इन दिस फैमिलीज, इट इज टिपिकल फॉर देम, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है. सो ऑल दैट प्रोसेसेस दैट वी आर गिविंग यू, आई एम चूजिंग देम सो दैट यू कैन डू इट व्हाइल बीइंग इन द फैमिली एज वेल. ओके, चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूं. एक है कंबल का जो आसन था, उसके बारे में मैंने बताया, वो सर्व कामना सिद्धि होता है. लाइक इट इज गुड टू कंप्लीट योर डिजायर्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस. उसके ऊपर आता है, आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे, मृग आसन का साधना करना. मृग आसन मतलब द स्किन ऑफ द डियर स्किन. नाउअडेज एनीवेज all these things have been banned, so nobody even dares to even have it, and those who have it, they are hiding it because it is also called a hide. वो चमड़े को hide ही बोलते हैं ना, so everybody is hiding that. But it's good, one way the poaching of those animals is stopping because of that. But मृग आसन के ऊपर किसको साधना करनी चाहिए, किस साधना के वजह से आपको मृग आसन पे बैठना चाहिए? जिसको सम्मोहन, आकर्षण की प्राप्ति करनी है. The person who are working on sammohan to allure, those people, if they sit and do it on the deer skin, it is very very effective. Now you should ask me towards the end why it is not hypnotism. Hypnotism is a mental game, it's at a physical level. I am talking all the things from a metaphysical level here. So मृग आसन से क्या होता है? If you do that, आपको सम्मोहन, आकर्षण की शक्तियां मिलने लगती है. काले हिरन, black deer, very famous, was in the news for quite long time. So if you sit on that, और उसके ऊपर जो करते हैं तो उनको, this is a very dangerous thing that I'm going to say because people will start looking for it then. अगर काले हिरन के ऊपर बैठ के जो साधना की जा सकती थी तो उसके वजह से मोक्ष की प्राप्ति होती थी. मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी साधना की जाती है वो ब्लैक डियर स्किन के ऊपर की जाती है. तो अब लोग पूछने लगेंगे तो क्या मेरी मुक्ति नहीं होगी क्योंकि मेरे पास ब्लैक डियर स्किन नहीं है? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट साधना. There is a way in which people have achieved that, and you have also chosen another way through which you will get your, सही है ना?
आप एक अलग तरीके की साधना कर रहे हो, वो एक अलग तरीके की साधना है। नहीं तो घर में कल पता चला लोग 15 तरीके के स्किन्स खरीद के घर में लटका दिए, बोले आज सम्मोहन करूंगा, कल मनोकामना पूर्ण करूंगा, परसों दूसरे लोगों को खींचूंगा। नो, नॉट दैट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट जस्ट टू नो क्यों होता है। बिकॉज टुमारो द नेक्स्ट जनरेशन पीपल कम एंड दे आस्क व्हाई दे आर सिटिंग ऑन दिस, व्हाई दे आर सिटिंग ऑन दैट। सो हो गया क्यों? ब्लैक जो डियर है उसके स्किन के ऊपर बैठे तो वो एक मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति कराता है। देन कम्स द मोस्ट अमेजिंग वन, बाघांबर, आसन पर साधना, मतलब सिटिंग ऑन द लायंस इन द टाइगर स्किन। ये किस लिए है? अब शिव किस लिए बैठता है उसकी स्टोरी अलग है, हम क्यों बैठते हैं वो अलग स्टोरी है। द योगीज यूज्ड टू सिट ऑन इट बिकॉज बाघंबर भी मोक्ष की प्राप्ति कराता है। लेकिन ज्यादातर इसकी जो इस्तेमाल है, मतलब द यूसेज ऑफ दिस, द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक डियर स्किन एंड द टाइगर स्किन, टाइगर स्किन का जो भी बाघंबर का जो है, इट इज मोस्ट प्रोबेबली यूटिलाइज्ड वेन एवर डूइंग तामसिक साधना, बिकॉज दैट इनकलकेट्स द तामसिक गुण विद इन यू। कापालिक गुण जागते हैं आपके अंदर, आपके अंदर थोड़े विकराल रूप जागृत होने लगते हैं। दैट्स व्हाई द टाइगर स्किन इज यूज्ड। Now there is a very famous story that people say शिव क्यों टाइगर स्किन पहनता है, like why he does he wear that tiger skin? You know the story, right? Why he wears the tiger skin? How many of you know it? Everyone, very good. Sumaji, you know that? No? Okay. Then Haribhai must be knowing it. Haribhai knows it, he designed it actually. So he looks good as a fashion, so he should wear that. Nahi, there is a very Vijay ji kahani to hai, but I'm not so fond of that story because it somewhere doesn't matches with the stature of Shiva. मतलब शिव को हम जिस तरीके से देखते हैं और वो जो कहानी है उसके सामने बहुत छोटी लगती है मुझे वो कहानी। But let's tell the story so that at least you should know that story also. So in the forest, Shiva used to roam. Daruk, the name of that place was Daruk Van. जो दारुक वन था, there many sages used to live. ऋषि मुनि रहते थे. And when I narrate the story, you will realize why I say that it is not matching with the stature of Shiva. So many Rishi Munis used to stay there and along with their wives. The wives were very supportive to their husbands, and they used to do all the pujas and all those things every single day, and they were very happy. And it is said one fine day Shiva enters into that forest. Daruk Van mein Shiv jate hain. And Shiva is known as Digambar, so no clothes. So he's walking into the forest. Now here see the typical thing that happens. When Shiva is walking in the forest, Shiva is least bothered about anyone. He is just walking into the forest. But now it is said like the wives of those rishis, when they saw Shiva, the way Shiva is, they could not move their eyes from him. अब ये कहाँ मैच होता है वो मुझे समझ में नहीं आता. But Shiva walks away from that place. But all these Rishi Patnis, they started following Shiva. Shiva went somewhere and sat into meditation, and they all used to go and just look at him like how amazing he is. Now all these rishis doing all the puja and all this, where all these fellow went? What is happening? And it started happening for quite some day. Then they were, what's happening? Then the rishis went to see where these people are going. And then they saw that there is somebody sitting out there, a yogi, and he's so filled with aura that everybody is getting attracted towards him. Then it is said
that this rishis got very angry without realizing who he is. अब ये कैसे ऋषि है जो शिव को नहीं पहचाने? They could not realize, okay, who is it? And what did they do? They said, oh, we are going to teach a lesson to this yogi. अब ये कैसे ऋषि है जो इतने गुस्से में आ जाते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता. Now what they do is they dig a pit. एक गड्ढा खोद देते हैं. जिस रास्ते से शिव रोज जाते हैं वहां पे गड्ढा खोद देते हैं. And more amazing and hilarious part is, in the story it is said Shiva fell into that. I said, in the daytime, none of us, if we see there is a pit, we will not fall into that. How come Shiva fell into that? And more than that, they said that the rishis did a yajna out of which a tiger came out. And they left that tiger into that pit so that it can kill that yogi. What kind of revenge? And it is said within a minute or two, within a short span of time, Shiva killed that tiger. And they saw that it is wearing the tiger skin on him. And then the rishis realized that this is not a normal being. Then they realized it is Shiva. मैं अगर ईमान को भी बोलूं ना, वो भी नहीं मानेगा. He will also say, no, this is not this. What kind of story is this? How can Shiva be like that? That's what I said. This is the very prevalent story that is said about that. But it's not that. Then what does it mean? What you should learn from that? Why Shiva is wearing a tiger skin? What is the secret indication behind it? The secret indication that you should always be realizing is, the tiger is the king of the forest. शेर जंगल का राजा होता है और उसके दहाड़ से ही सब डर जाते हैं. Only by its sound everything is just run away. Just think you are into the forest and you hear a tiger's sound. What will happen to you? Exactly. You don't know because you have never heard it. Might be Santan Krishnanji, when he was somewhere, might be he might have heard somewhere. Anytime you got that chance? Yes. So he has been into the forests also. So what do you see here? Dusri baat, there are two ways of looking at it. One, the tiger is the king of the jungle. Second, tiger is also the Vahana of Shakti. शक्ति का वाहन है. फिर शिवा उसके ऊपर क्यों बैठे हैं? Why is Shiva sitting on that? Very beautiful understanding here. Shiva is sitting on a dead lion skin. Yes or no? But जिंदा है क्या वो? तो फिर खाल कैसे है? So what is there? He is sitting on a dead tiger skin. Shakti is riding on a. There is another story. Yes, Deepika ji. वो मुक्ति वाली story सबको पता है. But here what happened is, you understand the indication behind it. So Shiva is sitting on a tiger skin, whereas Shakti is riding on a tiger. What's the difference here? Does it indicate that male should be more prominent, that even the female on that tiger she is sitting, it should be killed and slayed and sat on it? No. Indication बहुत simple है. The indication is, शक्ति के बिना शिव शव है. Yes. शक्ति के बिना शिव शव है, इसीलिए वो मुर्दे के ऊपर बैठा है, लेकिन शक्ति जिसके ऊपर बैठी है वो जिंदा है. On which Shakti is riding, it is alive. On which Shiva is sitting, it is dead, because Shakti is not along with him right that very moment. Why it is shown like he's always sitting on that? Because he has sent out his Shakti to create this entire thing. And as up until this creation goes, Shiva will somehow always be away from her Shakti. And he says,
if you are away from your Shakti, this is exactly what will happen to you. It's an indication of death. शक्ति के बिना शिव शव है, इसलिए खाल के ऊपर बैठा है, लेकिन शक्ति स्वयं शेर की सवारी करती है. So also indication, very good indication for all of us. If we don't know how to take care of the Shakti of our own homes, हमारा जीवन भी कुछ वैसा ही हो जाएगा. कोई खाल पे बैठे रहेंगे और क्या. और देखना आप, जिस घर में शक्ति की उपासना नहीं होती, जिस घर में शक्ति की पूजा नहीं की जाती, या जिस घर में शक्ति को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता, you see what happens in their house. But at the same time, it's also the responsibility of the Shakti itself. Because Shakti का काम क्या है? She has to keep it alive. कभी देखा है कि दुर्गा या पार्वती कभी मरे हुए शेर के ऊपर बैठे हुए? नहीं देखोगे. Because the thing with Shakti is she always has to be life-giving force. So similarly in the homes also, if the Shakti itself is not the life-giving force, what will happen in that house? बिल्कुल वही होगा, श्मशान बना देगी, क्योंकि वो काली बन जाती है तब, और काली का वास श्मशान में होता है. Are you realizing that? Another very worldly thing that you should understand, why Shiva is wearing that tiger skin. शेर राजा था, right? But if you keep on roaring, Shiva is the indication of Kal, उसे महाकाल कहते हो आप, who is beyond time space. You might be anyone, you might be a tiger, you might be a king, हाल तो यही होगा, खाल ही बनोगे, वो बताता है. Whatever you are, someday you will just be like this. And what he does, it is wrapped around with a snake. उनके कमर का बेल्ट क्या है? स्नेक है. Why that snake and why it is tied? It is an indication that सांप जो है वो भी काल है, मृत्यु का. It also indicates death. He says you can be anything in your life, but ये जो है ना, ये आपको बांध के ही रखेगा. ये जो काल है वो हमेशा आपके साथ बंधा हुआ रहेगा, और किसी ना किसी दिन आपका हाल ये होगा. Some or other day you are going to die because you are always tied to the snake, that is Kal, and you will go through and be this. But at the same time, who is wearing it? Who is beyond time. And if you are connected not to that, but to the one who is wearing it, then you will be beyond this. Na Kal, na Khal, bas Mahakal. So you go beyond that. So that's the indication why Shiva wears that. What is the indication that? And at the same time, there is other ways of, when I will define why those kind of things are used for a certain kind of thing. जैसे मैंने कहा कि व्याघ्र चर्म अगर बैठते हो आप उसके ऊपर, वो ज्यादातर तामसिक गुणों से भरा हुआ होता है. तामसिक पूजा के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. एंड स्पेशली जो कापालिक्स है, कन्फर्ट साधु है, वो लोगों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज दे डू दैट काइंड ऑफ साधना. So is it clear now? जितना भी समझ में आया. But you also agree with me that that story doesn't go quite well with Shiva. Okay. So next comes पत्तों का आसन, means sitting on leaves. There are certain kinds of leaves that can be used as a place to sit down and do the sadhana. पत्तों के ऊपर अगर आप साधना करते हो तो दीर्घायु की प्राप्ति होती है. मीन्स यू गेट मोर, व्हाट डू यू कॉल दीर्घायु, मतलब क्या होता है? व्हाट वुड यू कॉल इन इंग्लिश?
might be a long life, longevity, right? So for longevity, if anybody interested to increase their lives, please contact me. I'll give you names of few leaves. You can just sit on that, and some people will start sleeping on that also. But whatever it is, लेकिन किसे रहना है? जितना दिया है बहुत दिया है, और उतना ही काफी है. So the leaves, if there are certain leaves that actually helps you improve your longevities. Okay. Then I'm going to speak something about a very rare thing, जो आप देखे नहीं होंगे. भभूति का आसन. भभूति क्या मतलब क्या होता है? राख. स्मशान में गए तो आपने देखा ना, शिव त्रिपुंड लगाता है. Aghoris use the tripund, and also they put on, they smear the ashes. There is one asan that can be created out of ashes. उसे बनाने की जरूरत नहीं है, but we just collect that, keep it in a place, and we sit on that. But what does that indicate? अगर आप भभूत के ऊपर बैठते हो, स्मशान के राख के ऊपर बैठते हो, you are sitting on the ashes of the from the cremation grounds, what will it do? ये वैराग्य लेके आता है, त्याग लेके आ जाता है, और संपूर्ण वैराग्यता. एनीथिंग. देखो सुमा जी, when we differentiate between a human and other animal bones, right? Ashes. अघोर जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता which ash is it, but generally which kind of ash will you get? जानवरों को तो जलाते नहीं. So all that ash is available is of what? You and me. So अगर राख के ऊपर बैठ के धारण करते हो, साधना करते हो, तो वैराग्य की स्थिति बनती है आपके जीवन में. किसी को चाहिए तो बोलो. देन आता है श्वेतांबर आसन. श्वेतांबर English. What would be the English of Shwetambar? Okay, I'll just check that and I'll might let you know. क्योंकि श्वेतांबर को मैं, what would be the right English word for it? No, exactly वो white dress नहीं है actually विजय जी. White robe नहीं है वो. Okay, for the very simple understanding of it, sitting on a white cloth. But it is not the exact meaning of it. But श्वेतांबर मतलब ओके, वस्त्र के हिसाब से अगर देखते हैं विजय जी तो सफेद कपड़ा, right? So if you sit on a white cloth and do that kind of sadhana, then वही विद्या, कला, वैभव, समृद्धि, ये सारे चीजों की प्राप्ति होती है. Then comes another color, पीतांबर. पीतांबर मतलब येलो कलर, राइट? सो पीतांबर पे अगर बैठते हो, पीले वस्त्र परिधान कर, या रेशमी वस्त्र पर पहनकर, या रेशमी वस्त्र सन पर बैठकर, मतलब या तो आप यू आर वेयरिंग ए सिल्क क्लॉथ दैट इज येलो इन कलर, और यू आर सिटिंग ऑन ए आसन दैट इज सिल्क एंड येलो इन कलर. तो इस पर साधना करने से समृद्धि और कार्य जो नहीं होता है उसकी सिद्धि हो जाती है. इफ सम वर्क इज नॉट बीइंग डन, अगर आप उसके ऊपर बैठ के करते हो तो उसकी प्राप्ति होगी. देन आता है भगवासन. भगवासन क्या होता है? यू कॉल इट ऑरेंज और द फायर कलर, जो योगी पहनते हैं जो रंग को, भगवा रंग, राइट? ऑरेंज, आप ऑरेंज कहते हो लेकिन वो ऑरेंज नहीं है. सैफ्रॉन वुड बी द क्लोजेस्ट वन. यस, वो कलर का अगर आप आसन पे बैठते हो तो उसके ऊपर अगर आप बैठ के करते हो काम, तो आपको सच्चे सदगुरु की प्राप्ति होती है. मीन यू फाइंड द राइट काइंड ऑफ गुरु इन योर लाइफ. वो भगवासन है, राइट? देन इफ वी कम बैक एज this is another beautiful one. Another one would be, earlier we used to use that cow dung to
घर के सामने वो पूरा साफ सफाई करने के लिए इस्तेमाल होता था, राइट? सो अगर आप काउ डंग एंड काउ यूरिन, मतलब गोबर और गोमूत्र, इसको लेप के, मतलब इफ यू जस्ट keep it on the and just smear it on the ground, and on that you put a kambal ka asar, woolen mat, and if you sit on that and do your sadhana, तो गोलोक की प्राप्ति होती है। गोलोक मतलब विष्णु का लोक। तो उस जगह की प्राप्ति के लिए वो बहुत सिद्ध काम करता है। उसके अलावा द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इट इज, वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, कोई भी देवी देवता हो, प्रसन्न होके दर्शन देते हैं। और उसके ऊपर बैठ के अगर आप मृत्युंजय मंत्र की साधना करते हो तो व्याधि, जरा और अगर मृत्यु के भी करीब है, उस समय को वो टाल देता है। और अगर उस समय उसके ऊपर बैठ के मृत्यु हुई, देन डायरेक्टली पाथवे टू हेवन। डायरेक्ट पाथवे टू हेवन। तो लोग कहेंगे अभी तो फिर एक काम करता हूं, रोज उसी को लेप के उसी के ऊपर बैठा रहता हूं, उसी के ऊपर सो जाता हूं, अगर गया कभी। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ए साधना, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग ऑन दैट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सिटिंग ऑन दैट। ओके, लेकिन हर एक चीज का एक एक अलग अलग महत्व है उसमें। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू माइट नॉट हैव एवर हर्ड। हस्ती चर्म। हस्ती चर्म क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हस्ती चर्म? हस्ती चर्म कुछ नहीं होता, बट इट्स अ स्किन ऑफ द एलिफेंट। कब भी देखा है? उसके ऊपर भी साधना की जाती है। उसके ऊपर करने से क्या होता है? शाम दाम दंड भेद, ऑल पावरफुल। कोई भी मार्ग, एनीवे, आपको कोई रोक नहीं सकता। मतलब जैसे हाथी चलता है जब जंगल में, कोई रोकेगा क्या उसे? नोबडी इवन डेयर्स टू। उसी तरीके से वो होता है। शाम दाम दंड भेद की प्राप्ति हो जाती है। यू बिकम ए मास्टर ऑफ ऑल दैट। देन कम्स सिंहासन। अब बोलेंगे जिस पे आप बैठे हो, नहीं, ये नहीं, सिंह का आसन। द साधना दैट इज डन ऑन द स्किन ऑफ लायन। लायन स्किन के ऊपर जो साधना की जाती है, उसे करने से क्या होता है? राजयोग की प्राप्ति होती है। मीन्स जो राजयोग कहते हो आप, उसकी प्राप्ति के लिए पहले, जब राजा को राजा बनवाने से पहले, दीज काइंड ऑफ मेथड्स वेर यूज्ड। उनके जो कुलगुरु हुआ करते थे, तो वो उनको ये सारे शिक्षाएं देते थे। और किसी को भी राजा बनाने से पहले उसको ये सिंह के जो चर्म है उसके ऊपर बिठाया जाता था और साधनाएं की जाती थी। और इसीलिए राजा अब भी जब कोई भी आसन पे बैठता है उसे सिंहासन कहते हैं। दैट नेम केम फ्रॉम दैट स्पेस। सिंह आसन से सिंहासन हो गया। ओके, सो इट आपको वो शक्तियां देता है। अब और क्या रह गया? हाँ, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग आसनस, जिसे आप चीतांबर आसन कहते हो। जानते हो चीतांबर आसन क्या है? चीतांबर आसन से आप उसे नहीं जानते, लेकिन उसे सब आसन भी कहा जाता है। उसे प्रेत आसन भी कहा जाता है, या तो उसे मृत शरीर के ऊपर बैठ के
ध्यान करने को अमेजिंग स्पेस, सो नोबडी वांट्स टू गो देयर। लेकिन ये जो आसन है, ये सब साधना करने पर स्मशान सिद्धियां मिलती हैं, स्पेशली अघोर, स्पेशली तारा की साधना, स्पेशली चामुंडा की साधना, स्पेशली जो भी मीन्स मोस्ट प्रोबेबली डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज। I don't call that a destructive energy because there is no other word to tell them. They are fearsome energies that we can say. ये सारे चीजों की, स्पेशली स्मशान की साधना में ये सारे चीजें, जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है तो वहां से की जा सकती है। एंड देन मारण, उच्चाटन, भूत प्रेत वशीकरण ये जो सारे किस्से हैं ना, मृत आत्मा आत्मा के द्वारा कार्य सिद्धि करवाना, यस, डिसइंटीग्रेटिंग एनर्जीज वुड बी ए बेटर वन, आदि अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यस, ये सारे अच्छे सिद्धियां नहीं है, अभिष्ट सिद्धियां हैं, ठीक है। तो हमें तो जरूरत है ही नहीं इस सारे चीजों की, सो विल नॉट इवन गो डिप इनटू दैट सम अदर डे। सो these are certain asanas that are utilized, but now let me tell you few asanas that you should not use ever, कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये गलतियां मैंने देखा है कई सारे लोगों को करते हुए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो निषिद्ध है, जो नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दैट वे, उसे कहते हैं पत्थरासन, डायरेक्टली गोइंग सिटिंग ऑन ए स्टोन एंड डूइंग साधना। कभी किए हो? यू जस्ट गो एंड सिट ऑन ए रॉक एंड यू डू साधना। लोग कहते हैं ना, ऋषि मुनि पहाड़ों में चले जाते थे और वहां ध्यान करते थे, एंड आई हैव सीन मेनी पीपल गोइंग इनटू सच स्पेसेस, फाइंडिंग ए रॉक, सिटिंग ऑन दैट एंड पोजिंग फॉर द फोटोज। टिल पोजिंग फॉर द फोटोज इट इज गुड, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ पत्थर के ऊपर अगर बैठ के आप साधना करते हो तो आपके जीवन में दुख क्लेश भर जाएगा। So even if you go into a mountain range, Haribhai, do you remember on that day when we were in Mani Mahesh, there were so many spaces, but we found where a log of woods were there, and I said that you should sit there, although it was not very comfortable. अगर कंफर्टेबल बैठना था तो वहां पे बहुत सारी जगह थे जहां बैठ सकते थे, but did I allow you to sit there? No. द रीजन इज, अगर आप पत्थर के ऊपर बैठ के साधना करोगे तो आपके जीवन में दुख क्लेश भर जाता है। एंड इफ यू आर गोइंग इनटू ए माउंटेन रेंज, कैरी योर आसन, आसन लेके जाओ, वहां पे बिछाओ, उसके ऊपर बैठ के करो, नो प्रॉब्लम, बट डोंट डायरेक्टली सिट ऑन ए रॉक एंड डू द मेडिटेशन और एनी काइंड ऑफ साधना। देन आता है अब ये तो नहीं बोलूंगा बिना आसन, ठीक है, ये वाला देख लो, बिना आसन, केवल भूमि पर बैठकर मंत्र सिद्ध नहीं होते, सो यू शुड नॉट बी सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड डूइंग इट। देन आता है तृण आसन, मतलब पेड़ के ऊपर बैठ के साधना। इससे कीर्ति की हानि होती है। अगर आप पेड़ के ऊपर बैठ के साधना करते हो तो, पेड़ के नीचे बैठ के साधना करते हो इट्स गुड, लेकिन पेड़ के ऊपर बैठ के साधना करते हो तो कीर्ति की हानि होती है, मींस योर डिप्लीशन ऑफ योर फेम, नेम एंड ऑल दोस थिंग्स। और एक one specific asana is there that is actually good for the people those who are not married. अगर शुद्ध वस्त्र है, मतलब यू टेक ए न्यू क्लॉथ और उसके ऊपर साधना करते हो तो अच्छे स्त्री की प्राप्ति होती है। अब जिन जिन की शादियां नहीं हुई, आज से कपड़े खरीदने चले जाएंगे। जो हंस रहे वो पता चल रहा है ना, अभी जिन जिन की शादी नहीं, लेकिन मुझे
कुछ लोग शादीशुदा है वो भी हंस रहे, क्यों हंस रहे वो मुझे नहीं पता. And there are many more of it, many more of it. But for now, I think this is enough, because I will just conclude that, so that, because I have to give you some other processes. Now, if you have been listening to me well, and I see you have been taking notes also, पता नहीं जैसे एग्जाम देने जा रहे हो, क्यों नोट्स ले रहे थे वो तो पता नहीं, but okay, if you have written it down, now go through it, and you will realize one specific thing. Why a tiger skin is used? Why red and black? Red and black are used. Black अगर हम यूज करते हैं कभी भी राजन जी, so it is especially related to any kind of शक्ति. 10 महाविद्याएं हो गए, काली की पूजा हो गई, उसमें हम ब्लैक यूज करेंगे. लाल है, लाल कलर को शुभ माना गया है, कोई भी शक्ति पूजा में लाल का इस्तेमाल किया जा सकता है. You can use it for any शक्ति साधनास. Red, but black only for the 10 महाविद्यास and काली. उनके जैसे जो भी वो रूप हैं उनके लिए वो आप यूज कर सकते हो. अघोर की साधना, शिव की कई सारे रुद्र रूप की साधना है जो आप काले वस्त्र पे कर सकते हो. और वैसे ही वी ऑल नो इट, वेरी वेरी फेमस, जो कार्तिकेय हैं डाउन साउथ, उनकी साधना तो उसी ब्लैक कलर पे ही की जा सकती है. राइट. सो जब वी टेक दैट, व्हाट डू यू कॉल दैट सुमा जी, माला लेते हैं ना. So when the people, what is that? You can type it. I am just missing. Ayyappa Swami. Ayyappa Swami. Ayyappa Swami. So for them also, it is very very conducive for them, because he is also a war god. So ऐसे शक्तियों के लिए आप काले वस्त्र का इस्तेमाल किया जा सकता है. और कभी कभी कुछ ऐसे साधनाएं जो मैं आपको करवाऊंगा, वो सात्विक होने के बावजूद भी उसको काले रंग की जरूरत पड़ती है. जैसे एक पर्टिकुलर मंत्र है, वो एक मंत्र है जिससे 3 लोगों की साधना की जा सकती है. विथ वन मंत्र 3 गॉड्स आर अचीव्ड. काली, कृष्ण एंड शिव. एक मंत्र, 3 गॉड्स. वेरी वेरी पावरफुल मंत्र, बिकॉज कृष्ण इंडिकेट्स सम्मोहन, Kali indicates supreme power, Shiva says beyond time. एक मंत्र है. But you are not ready for that now. So don't expect me to tell you now. जब हो जाओगे तब बता दूंगा. But today, it being an auspicious day for this, especially this. Sorry. Before going, let me sum it up what I was saying. Did you realize the kind of usage of a skin is related to the quality of that being? Yes or no? वो जैसे हैं उनके गुण आप में आ जाएंगे, इसलिए वैसे तरीके का इस्तेमाल किया जाता है. Look at a deer. Let's say you are going in a forest and you see a deer. Will you not stop to look at its beauty? Somehow, how simple it looks, but you will still stop to look at it. Yes or no? होता है कि नहीं होता है? And it is इतना प्यारा है, मतलब it is so मतलब innocent kind of stuff you can say. It looks innocent actually. Yes or no? So उससे क्या होता है, आपकी आकर्षण बढ़ जाती है उसके तरफ. मैंने क्या कहा, if you sit on a deer skin, what will happen? आकर्षण होता है. But if you sit on a black deer skin, वो मोक्ष की प्राप्ति कराता है. Why? Because dark is indication of, मैंने क्या कहा, किसके पूजा के लिए आप काला वस्त्र यूज कर सकते हो? काली की. काली कहाँ की अधिपति देवी है? स्मशान की. और कौन मुक्ति दे सकता है उस जगह से? Got that? टाइगर. उसकी प्रवृत्ति कैसी है? हाउ इज इट? वो मार के खा जाता है. So, for what will it be used? तामसिक साधनाओं के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. Not only that, not only तामसिक, there are some वीर भाव की साधनाएं हैं. Means
फॉर गेटिंग दैट काइंड ऑफ पावर एंड एनर्जी विद इन यू। वैसे साधनाओं के लिए भी शेर का खाल यूज किया जा सकता है। देन सिंहासन फॉर राजयोग। व्हाई? बिकॉज द लायन नॉट ओनली इज a king of the ye, he looks like that also. So are you getting like, और जैसे मैंने कहा, if you are doing on the sadhana on the elephant skin, क्या है वो? शाम दाम दंड भेद. No one can stop you. You become unstoppable in that, because just like a elephant, if it walks, nobody comes in front of it. लेकिन हमको तो ये सब चीजों से करना नहीं है, तो हम जो भी करते हैं सिंपल सा दो चीज कर लो। वन इस कुश का आसन, वो बिछाओ, उसके ऊपर एक कंबल का आसन बिछा दो, दैट्स इनफ फॉर यू। हाँ, इफ देर आर सर्टन colors that I suggest on particular days, please use that. Or else red is a good color to be on. White is a good color to be on. Black for certain days, yellow for certain days. But if you have a mixture of colors, I have seen some people, प्रीति जी, वो ना हर रंग का एक बना के रखे हैं। मैं किसी के घर गया था धवल जी, और उन्होंने अपना आसन दिखाया मुझे, मतलब ये क्या है, हर रंग है इसमें ना, क्या पता आप किस दिन कौन सा आसन का रंग बोल दो। मैं बोला ये आसन नहीं, पैर साफ करने वाला ये है। बट पीपल आर सो इंटेलिजेंट। कभी कभी ना मेरे को लगता है कि हाथ जोड़ के इनके पैर छू लूं। मतलब यू जस्ट वांट टू जुगाड़ इन दैट ऑल्सो। भाई 30-50 रुपए खर्चा होते, खरीद के रख लो अलग अलग रंग के। You see, if you are trying to get away like this, no, life will also get away with you like that. आपकी साधना भी वैसे ही हो जाएगी। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम सिटिंग ऑन समथिंग दैट हैज ऑल द कलर्स। फिर रेनबो और क्या, माय गुडनेस। चलो कोई नहीं। So did you realize that how everything is associated to all the things? But more than that, why Shiva is wearing that? The two things that we spoke of. It is an indication for us, right? Now, let's move to this auspicious day for now. आज आपको क्या करना है? पहले एक बहुत ही सरल उपाय बता देता हूं, या तो दो उपाय बता देता हूं आज। उसके बाद आज इवनिंग क्या करना है वो भी बता दूंगा। ओके, first two processes, you write it down or whatever you want to do, or somebody write it down or you can post it in the group. Because this being the Dhanteras, 11 कितने 11 कौड़ी होते हैं, कॉन्च शेल्स छोटे छोटे, वो इजीली मिल जाएंगे आपको। On this day, if you get yellow color type, not the white ones, अगर येलो मिल गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता तो जो मिला वही। बट ट्राई टू फाइंड द येलो वंस। ओनली 11। हाउ मेनी? 11। ब्रिंग इट। देन टेक ए बाउल, हल्दी का पेस्ट बनाओ, नॉट वाटरी बट लाइक ए पेस्ट, टर्मरिक का। ओके, इफ यू हैव सैफ्रॉन, थोड़े से उसके अंदर डाल दो। ओके, देन फ्यू राइस ग्रेन्स, साबुत राइस होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। द राइस शुड बी कंप्लीट, नॉट ब्रोकन वंस। उस हल्दी के लेप में उसको मिला दो सारे को, राइस, सैफरन, हल्दी, ओनली 3 थिंग्स। गॉट इट? मिक्स इट, एंड देन दोस 11 कॉरीज, मीन्स दोस कॉन्च सेल्स, छोटे छोटे जो होते हैं। हरी भाई, इफ यू कैन जस्ट शो इट ऑन, इफ यू कैन फाइंड ए इमेज ऑफ इट। यू उतना बड़ा होना चाहिए बाउल जिसके अंदर वो 11 का 11 उसके अंदर दब जाए। दे शुड बी कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू द हल्दी, बट इट शुड नॉट बी लिक्विड, इट शुड बी काइंड ऑफ ए पेस्ट, सेमी सॉलिड यू कैन से, सो दैट यू कैन पुट इट इनसाइड दैट एंड इट इज देयर इनटू इट। और पूरे के पूरे बाहर नहीं दिखने चाहिए। मेक श्योर द कॉडीज आर नॉट सीन आउटसाइड, दे शुड बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनटू द हल्दी। क्लियर है यहां तक एवरीवन? Okay, then today evening what process I will tell you, वो जो जब छोटा सा process है, when you will do that, you take this
and keep it there. आपका मंदिर जहां पे है, लक्ष्मी की पूजा जहां पे भी करोगे, उसके सामने उसे रख दो. And one more thing that we will be requiring is a red cloth, लाल कलर का कपड़ा. If you have still with you, it is good. If you don't have, just get one. A handkerchief size, it would be good enough. So Haribhai is showing it on the, yeah, Haribhai, you can put it on the screen also, no problem. Okay, so everybody can see that, or else let me just help it out. Can you see it now? So ये होता है स्मॉल लिटिल कॉर्न सेल्स ना, ये आराम से आपको कोई भी पूजा दुकान में मिल जाएगा, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली ये मिल ही जाएगा. सो प्रीति जी एंड शिवा गुरु जी, आई डोंट नो like if you people will get it or not, but if not, you do one thing, at least try to get it. If you are not able to get it today, next Friday, at least next Friday, by that time even you can order it online also. So get it and do the same process. Whatever I'm saying, you can do the same process out there, especially because I don't know, in people out there in US, they might not be getting so easily. So now उसके अंदर डाल दिया, you just immersed it into that, then keep that red cloth on it. उसके ऊपर वो लाल कपड़े से ढक दो उसे. Just cover it with the red cloth and keep it and leave it there in front of the Devi. आप उसके बाद whatever puja you have to do, whatever thing you do, just keep it there for the next 3 days. दिवाली और उसके बाद वाला दिन, मतलब Monday, Tuesday, or it is okay, even Wednesday you leave that. On Thursday you bring it out. Thursday को क्या करना है? Thursday evening bring those cowries out of that turmeric, because by that time it would have become gut. Pour a little water into that so that it softens, and then bring out the cowries. And whatever turmeric has gone into that, don't remove it. It should be like it as is. वो जैसे का वैसा छोड़ दो, उसे धोना नहीं. उसके बाद you just pull it out and on the same cloth, the same red cloth, उसके अंदर डाल दो. Tie a knot. While tying a knot, just remember Lakshmi Devi or do the jap of Shreem. Okay, बीज मंत्र श्रीम का जाप कर लो and tie a knot. 1, 2, 3. How many knots? 3 knots. So 1 माला each for each knot. श्रीम का 1 माला 1 गांठ के लिए. Clear everyone? 1 माला 1 time, 1 माला another, 1 माला another. 3 मालाएं हो गई. Leave it that as a potli in your temple for that night. उस दिन उसको बांध के वहीं छोड़ दो. And this haldi that you have, you can throw it away. It's of no use to you now. But don't throw it away like into the nala or into the flush. Please not, because वो पूजा का चीज है. Keep it. The best thing is you put it into the near your plants if you have. पेड़ों में डाल दिया तो बहुत अच्छा है. Okay? Is it clear? Now, on Friday morning, anyways, we are doing the 16 days, 16 Fridays wala thing, right? That day, after doing the process, take that pouch, take that bundle, whatever you have made out of it, वो जो कौड़ी का जो पोटली बनाए हो आप, take it and just keep it into the place where you keep your jewelry, money and all those things. वो उसी जगह पे रहेगा, वो मंदिर में नहीं रहेगा. ठीक है? So keep it there. क्या होगा इससे? जहां रखते हो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या होगा उससे. These processes are absolutely related to Lakshmi Devi. And anything that is related to Lakshmi Devi, तो धन के साथ उनका, वैभव के साथ उनका नाम हमेशा जुड़ा हुआ है. So धन धान्य वैभव के लिए ये आप अपने तिजोरी में रख सकते हो. आप अपने बिजनेस, जहां पे बिजनेस का जो आप गल्ला कहते हो, ड्रॉ इन विच यू कीप द ट्रांजैक्शंस ऑफ द मनी, you can keep it there. Not in your temple. This one should not be in your temple. Not on Thursday. Thursday you leave it there. वो पोटली को वहीं फिर मंदिर पे छोड़ दो.
फ्राइडे सुबह आपका वो दीप जो जला रहे वो जलाने के बाद यू टेक दिस एंड कीप इट इन योर तिजोरी. Got it? Everyone clear on that? So this is the first process. What are the requirements? Nothing. Very simple things that you will find in your homes, except the cowries, I believe. So 11 cowries चाहिए, एक लाल कपड़ा, हल्दी, saffron, and sabut rice. If you have basmati rice, use that. It's good. Deep per person. नहीं, Karthik, I didn't got you. I'm just saying because every Friday we are doing the process. Now, after the process, you can just take it and keep it in there. Because Friday, it should be taken to your tijori. And Shiva Guruji, if this is not happening this Friday also, take one more Friday. But for you people, those who are not doing it today, do it on a Friday, leave it for the entire week. The next Friday, you put it into your locker. Clear hai? Okay. So, हाँ आबाजी आज ही करना है बिकॉज आज के दिन बहुत शुभ होगा वो. ओके, सो दैट्स वन थिंग. द नेक्स्ट डे प्रोसेस, संतोष जी, डजंट मैटर. आज क्योंकि धनतेरस की पूजा हम इवनिंग में करेंगे, इट इज बेटर वी डू इट इन द इवनिंग ओनली. Okay, so everyone at your place also. हाँ भाई, लास्ट टाइम के है वैसे ही, उसको क्या करना है? अगर जिनके पास वैसे वाले हैं, लेकिन लास्ट टाइम का प्रोसेस ये नहीं था, लास्ट टाइम का सिर्फ कौड़ी थे. हाँ, उसको रहने दो. यू डोंट रिमूव दैट बिकॉज वन बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस इज, हम जो 5 चीजों का पोटली बनाते हैं ना, वो जल्दी खराब हो जाते हैं. बट हियर इट वोंट. नहीं, पर फैमिली वन इज इनफ, कार्तिक. One potli for one family is enough. So not required for everyone, one kind of thing. So anyway, that is, anyways, जैसे आप पूजा करते हो ना, एक कॉइन यूज करते हैं ना हम पर्टिकुलरली. सो वो सोने का हो, चांदी का हो, जो भी यूज करते हैं, इट इज केप्ट एवरी ईयर. सो कौड़ी इसको जमा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. वैसे भी लास्ट ईयर का जो है, इस साल थोड़ा बढ़ने चाहिए. तो समथिंग शुड इंक्रीज ना, तो बढ़ा दो फिर. सो दैट वाज वन. इफ यू आर गोइंग एंड ट्रैवलिंग, एक बार अनम्यूट कीजिए कमलेंद्र जी. प्रणाम गुरुदेव. अच्छा, तो कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं आप? गुरुजी, मैं बस आज निकल रहा हूँ, पिताजी के घर जाऊंगा. कौन से टाइम पे? शाम को निकलूंगा, करीब 4:30-5 बजे. हाँ जी. उससे पहले कर लो. ओके. और इसको साथ ही ले जाऊं मैं? नहीं यार, उसको तो घर पे ही छोड़ के जाओ. क्योंकि मैं आऊंगा सर, क्योंकि मेरे को 15 दिन लग जाएंगे. मैं वहां जा रहा हूँ ना, मैं आपको बताया था, शुक्रताल. ओके ओके ओके. और कोई भी नहीं है? नहीं, घर पे कोई नहीं होगा. वाइफ और मैं दोनों जने जा रहे हैं हम लोग. तो उसको बना के वही छोड़ दो, आने के बाद वो प्रोसेस कर देना. ओके, दैट इज पॉसिबल. बिकॉज यू शुड नॉट कैरी दैट. अच्छा 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 अच्छा. ठीक है ठीक है ठीक है, वो कर लेते. थैंक यू. Yes, Sudhaji. If it is there, it is okay. If you want to take it to your tijori also, no problem with it. Okay. So now, another process. या इतना काफी है, और 2 बाकी है अभी एक्चुअली. So one more thing that you have to do. It is going to be a 43 days process. Who wants to do it? First, let me know so that I can give. Okay, all the people, those on the screen, I can see thumbs ups and high raises and high fives and okay, so what all it is? Okay. Okay, Sneha ji. Fine. Another process that you can do, you write down the samagri ke naam likh lo. And I request someone to also write it down so that it can be posted in the group for the benefit of all.
Okay. Okay, Lavanya ji. This process has to be done in your kitchen. ये किचन में ही होगा. Okay, and very simple process, doesn't even take a 1 minute time. No mantra jap, nothing. No mala, no mantra jap, no mat, nothing. एक छोटा सा काम करना है बस. Take a bowl. Clay का है तो बहुत बढ़िया है. If it is clay, it is very good. Okay. और अभी तो दीपावली का समय है. You can get a bigger diyas also. You can take a big diya. You can use that also. From this day on to the next 43 days, what you have to do is either in the morning or in the evening, whichever is feasible to you. In that bowl, clay bowl, just put few कर्पूर. कर्पूर का है ना, थोड़ा सा कर्पूर डाल दो उसमें. If you are having that camphor balls, like small छोटे छोटे, अब तो वो pieces जैसे आने लगे हैं, put that. 4-5 pieces is enough. 3-4 cloves long, 3-4 long डालना है उसमें. 1-2 strands of saffron in it. This is the requirement. 1 clay bowl, karpur, and then clove and saffron. Clear hai? So put a few karpur in that, 3-4 cloves into that, and 2-3 strands of new one. Please use it for the new one, not the used ones. But the same bowl will be used for the next 43 days. Okay. So only one bowl is required. So what you do is in the evening, in your kitchen, evening or morning, आपका पूजा का जो भी समय आप करते हो, just keep it in your kitchen and burn it. उसको जला के छोड़ दो बस. Nothing doing in that space. कुछ और नहीं करना है. Only allow it to burn it completely. That's it. That cloves should be burnt. So put enough camphor so that the cloves are burnt. And also place the cloves on the camphor so that it burns it out. Okay. और saffron के 2-3 उसके ऊपर रख दो so that it all burns. Now, some people will question like why you are doing it. You see, fire has a quality to enhance anything that you put into that. It enhances its one particular quality of spreading it. And both clove has a very good quality to remove negativity from your home. Saffron has a very good quality to attract wealth into your home. Karpur is also a very good thing that Lakshmi is very easily happy with. And you are using the fire element to burn it in an earth element. Means the negativity is burnt in the earth where you are right now. And in the earth, the smell of those good things is spreading where you are right now. इसलिए मैं कहता हूं अगर clay का अगर bowl है तो it is very good. It indicates where you are and what you need in your life. And this should be done counting 43 days. And if a female is doing, don't worry, it can be lighted up by anyone in your house. ऐसा जरूरी नहीं कि आप ही को करना है. All that needs is you should complete the 43 days and without break. Got it? कितना मिनट लगेगा? Might be 1-2. Smokeless camphor, okay, because you people or else you will ring the alarm out your houses, right? US people have another issue. वो कैम्फर भी जलाते हैं तो उनके बेल बजने लगते हैं. Okay, you can use that. I understand that. So find a way if you can. So ask somebody to lighten it up.
अब धवल जी कुछ साधनाएं साधना ही होती है, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, लेकिन फल भी वैसा ही मिलेगा। कैन वी से लाइक दिस, अच्छा लक्ष्मी जी मैं कुछ दिन ट्रैवल कर रहा हूं, आप थोड़े दिन के बाद आओ, ओके? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि एनीबडी इन योर हाउस कैन डू इट। इट्स नॉट दैट यू स्टार्टेड एंड यू हैव टू डू इट जस्ट एज वी आर डूइंग फॉर दी फ्राइडेज, नो, वैसा नहीं है। ये कोई भी जला सकता है, ओके, फॉर द नेक्स्ट 43 days। एंड इफ इट इज टू बिग फॉर यू, प्लीज डोंट डू इट। करना जरूरी नहीं है आपको, मत करो। सो ये दो प्रोसेस समझ में आ गए। वन वाज यस टुडे, सारे अच्छे दिन हैं आज, तो आज से ही शुरू कर दो। आइदर मॉर्निंग और इवनिंग, अप टू यू, वॉट एवर यू चूज। लेकिन अगर मॉर्निंग में कर रहे तो मॉर्निंग में ही करो। नो, टुडे मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, नो, choose your convenience but do it in that same space। मटेरियल इन द बाउल, वो बाउल कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में चांदी के बर्तन है, उसमें अगर रखते हो तो बहुत बढ़िया है। सोने के बर्तन है, उसमें रखते हो तो बहुत बढ़िया है। बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल दैट इज यूज्ड ऑल्सो इम्पैक्ट्स द प्रोसेस। अगर चांदी के बर्तन है तो बहुत बढ़िया है, राइट? सो ट्राई टू यूज दैट। एंड इफ यू डोंट हैव, डोंट वरी, वो भगवान लक्ष्मी के पास रख देना, बोलो इसको अगली बार तक सोने का बना दे, अगली बार इसी में करूंगा। I just have this one, I am putting into it, just convert this into some silver or gold next time so that I can use it next time. Yes, Aliva ji, for the first process. Second process only and only you should do with the clay. मिट्टी का जो है वो सेकेंड प्रोसेस के लिए है, चांदी का जो है वो फर्स्ट प्रोसेस के लिए। कौड़ी टर्मरिक जो प्रोसेस है, इट विल बी डन ऑन ए सिल्वर वन, एंड द बर्निंग ऑफ द फायर इट इज इन द क्ले, ओके, फाइन दैट। सो आज का प्रोसेस क्या है फिर? अब रेवती जी बोल रहे मैं तो ये सब भूल चुकी हूं, अब क्या करूं? Already too much of confusion, like okay, that process, this process, then today's process. Don't worry, people are keeping a writing of that, so they are going to paste it in the group so that you don't get confused what to do when. And once they post, if I see there is something wrong, I will clarify that also, okay? So nobody is losing anything, and these processes are so simple, you cannot do it wrong. तो आज क्या मंत्र जाप करना है? टुडे while doing the puja, what mantra you should be chanting especially for today? Okay, so we all know like this is a very auspicious day. If you don't know how auspicious it is, you should visit my place where I stay. You will know how auspicious it is, because you will not be able to walk on the streets today, because the place where I stay, all the jewelry shops are there and all the vehicles are already packed. आपको चलने के लिए भी जगह नहीं है आज। मतलब लोग आलू प्याज भी वैसे नहीं खरीदते होंगे जैसे आज सोना खरीदने वाले हैं। And best place to look at it is where I stay. Just you come out and you will see what's going on. चलो, so coming back, देखो इस शुभ धनतेरस को, and on this auspicious day, we have already known from our childhood, पुराणों में भी इसकी व्याख्या की गई है। मान्यताएं हैं कि on this day if you do a certain kind of पूजन, means पूजा ध्यान करते हो तो उससे धन धान्य की प्राप्ति होती है, means wealth and वैभव की प्राप्ति होती है। सो
Kuber is one more person who is also the one who distributes the wealth. तो आज एक ऐसा मंत्र दे दूंगा जो एक मंत्र में कुबेर और लक्ष्मी दोनों का पूजन हो जाए. One mantra for 2 deities. Good na, so you don't have to do more malas. आबा जी अच्छा है ना, एक ही माले में काम हो जाएगा. चलो कोई नहीं. So today in the evening you have कुबेर यंत्र, लक्ष्मी जी का यंत्र या कुबेर जी का यंत्र अगर है आपके पास, ठीक है, या तो फोटो है आपके पास, इट्स गुड इनफ. ओके, अगर आपके पास कुबेर का यंत्र फोटो नहीं है, लेकिन लक्ष्मी का तो होगा ही होगा. एनीवन हु डजंट हैव ए लक्ष्मी फोटो इन देयर हाउस, okay, you should have one. okay, और जिनके पास कुबेर जी का नहीं है, छोटा सा हल्दी का एक पिंड बना दो. Just make a small ball of turmeric. Keep it by the side of Lakshmi. धन आकर्षण उससे बड़ा है, वो नहीं है वो. उनको जो देता है वो है. So but for Kuber, because of this day, this auspicious day, उसके लिए बता रहा हूं. So वो जो येलो टर्मरिक का जो आप बॉल बनाते हो उसको लक्ष्मी जी के साइड में रखो. एक ही नाम से पानी, यू जस्ट ड्रॉप ए लिटिल वाटर ऑन इट. ओम कुबेराय स्थिरमस्तु. ओम कुबेराय स्थिरमस्तु means this ball, now I look at you as Kuber and you may be settled here. At least ये आज के लिए तो कर लो. कल क्या करना, लक्ष्मी पूजा हो जाने दो. Within 2-3 days you can take that ball, put it into some water body, कोई भी जल में छोड़ दो उसे. ओके, लेकिन अगर आपके पास फोटो है या यंत्र है, इट्स वेरी गुड. क्या करना है? सो टुडे इन द इवनिंग वी विल डू द रेगुलर पूजा काइंड ऑफ थिंग. थोड़ा सजा दो फ्लावर से, चंदन, जल छिड़क दो, दिया बाती कर लो, प्रसाद चढ़ा दो. ओके, और द मंत्र दैट आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ, इफ यू डू दैट, तो आपके घर में धन संबंधी सारे समस्याओं का निवारण हो जाएगा. इट इज बिलीव्ड दैट दिस मंत्र कैन रिलीव यू फ्रॉम ऑल योर, especially the things related to wealth. And wealth, not only money. I always believe wealth has a very bigger definition than money. But still, if you have any issues with money related issues, may this help you today. So मैं मंत्र आपको बोल देने जा रहा हूं. ये मंत्र का जाप आप कहां बैठ के करना है, किस दिशा के तरफ मुंह करना है, वो सब बता देता हूं. रेड आसन, लाल कलर का आसन के ऊपर बैठना है. एंड फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, पूर्व मुखी होके इसको बैठना है. आसन के ऊपर, लाल आसन के ऊपर बैठ जाओ, पूर्व की तरफ मुख करो. कमल गट्टे का माला, लिसन इट वेरी केयरफुली. कमल गट्टे का माला, या तो स्फटिक की माला, और एल्स फिंगर काउंट. नाउ मेनी पीपल हैव ए इश्यू विथ फिंगर काउंटिंग. नाउ अगर आपके पास कमल गट्टे की माला या स्फटिक की माला नहीं है तो आप कैसे करोगे? देख लो, काउंट देख लो. इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Now back 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. हो गया 25 का.
So into 4 and then 8. Got it? And you always start from here only. यहाँ से ही शुरू करो. So it is easy. आराम से चला जाएगा. Okay? So this is how you can have a easy 25 count. 25 count आ गया तो it would be easier for you. 125 completed, second part of 25 completed, third completed, fourth completed. And then again the 8 should be counted from here only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. End it. 108. Got it? Chandan ki mala Padma ji, no, not in this case. It is very specifically mentioned about Kamal Gatta and Spatik. Agar nahi hai, to finger count. Not the Chandan one. Okay? So, you sit facing towards the east, Kamal Gatte ke mala, and a minimum of 1 mala, 108. And you can do as much as you want. There is no restrictions to stop it, but minimum count should be 1 mala, that is 108. और उसके ऊपर आप रात भर बैठ के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं कहता हूँ रात भर आप करते रहो, वो बरसाते रहे, as you wish. And some people, lucky people are like there, like Santoshi ji and Shashi ji, we both will do one mala. More, get more. मंत्र अभी बोला, अभी बोलना है मुझे. It will come. I will also record the mantra. I will send it in the group. So don't rush. पहले आम आने दो, फिर draw कर लेंगे. So all of you in the room, please close your eyes for a moment. So that first and foremost thing, you hear that mantra once. So be stable in your space, straight बैठो. Keep your spine erect and with complete focus. Just for a minute, just do the Sukha Kriya or the slow breathing process so that your body settles down, your mind settles down for this. And it is clear. Very slow breathing and very slow breathing out. Now, your entire focus on my voice. पूरा आपका ध्यान मेरे शब्दों की तरफ, और मैं जो भी मंत्र उच्चारण कर रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुने. ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय नमः. ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय नमः.
ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरय पूरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय नमः। So please open your eyes. This is going to be as simple mantra as that. Okay. Appears simple, but a very, very powerful mantra. May this take care of all your ailments of life. आपके जीवन में जो तकलीफ है उससे दूर करे. So these are the processes that you can do. ये तो आज का था, फिर कल का क्या? What about tomorrow? Shall I? देखो दिवाली है तो बोनस तो देना पड़ता है. या भर गए हो? अभी कुछ लोग कहते हैं नीलिमा जी उसने हमें इतना भर दिया है कि हम जाप और मंत्र बन गए. लेकिन संध्या जी का एक अच्छा चीज बोले इट इज गुड दैट यू आर कीपिंग अस बिजी देयर. इफ यू आर नॉट बिजी देयर वी विल बी बिजी समवेयर एल्स. कल के लिए क्या? कल के लिए एक मंत्र जाप है, लेकिन आपको मुझे बताना है कि किसके लिए मंत्र करोगे. यू विल टेल मी व्हाट काइंड ऑफ मंत्र यू नीड. यू देखो देखो लक्ष्मी के कई सारे गुण हैं और उसके कई सारे सिद्ध मंत्र हैं. ओके. लक्ष्मी के साबर मंत्र जो है, एक होता है कि ओपनिंग द डोर्स फ्रॉम ऑल द वेज, मतलब चारों दिशाओं से ऐसा रास्ता खोल दे कि घर में बस धन धान्य पूर्ण हो जाए. और एक है एवरीबॉडी बिकम्स योर फैन. फैन इज नॉट गुड. एसी. Now, Shivaji, when I speak of that, then people say, okay, so you must be using that. I don't have to use any of those. But especially people, those who are at a space where they deal with people, right? They have to manage people. They are at higher places, higher positions where they have to take decisions. For them, it is a must thing. So which one? This is for, मतलब एक तरफ का वशीकरण समझ ही लो. अब उषा जी सोच रहे अब किस किस को, मतलब कौन कौन लपेटे में आने वाला है अभी. नो, डोंट डू इट जस्ट टू ब्रिंग समबडी इनटू योर. एंड यस, अब देखो कमलेंद्र जी और है, वो कहते हैं दोनों दे दो. फिर मैंने तो थर्ड बताया ही नहीं अभी. चलो कोई नहीं. So I think today we are already doing one process regarding धन के लिए. तो process तीनों ले चुके हैं आज. One, we have already taken the jap, then we have taken two processes, कौड़ी वाला process और burning of that. So I think this would be much better for all of us. Spiritual people should be attractive. अब आभा जी को देखो, वो बात करे तो ही लोग उनके बातों से बह के चले जाते हैं उधर. और एक है, वो हंस रहे हैं, उनका नाम अभी मैं बोलूंगा तो फिर वो हंस के वहां गिर जाएंगे. वो पता नहीं मुझे देखते ही हंसने लगते हैं.
तो गायब हो गए, वो कैमरा से ही गायब हो गए। चलो कोई बात नहीं। क्लोज योर आइज, लेट मी डिसाइड। आप लोगों के आंखों में बस क्या कहते हैं उसे, मतलब बोलते हैं और भी और भी और भी छलक रहा है। अब आंख बंद करो, बैठो, मुझे डिसाइड करने दो व्हाट इज गुड फॉर यू ऑल। Settle down completely. So first one goes this way, and this is for gaining overall confidence power within your life, being so confident within yourself that people get confident by looking at you. So the mantra goes like this. क्योंकि ये सावर मंत्र है, it would be easy, a little bit longer, but we can do it. Okay, so here we go. ओम नमो भगवती पद्मावती। ओम ह्रीं श्रीं ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय आन पूरय सर्व जनं वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती पद्मावती। ओम ह्रीं श्रीं ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय आन पूरय सर्वजनम वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती पद्मावती। ओम ह्रीं श्रीं ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय आन पूरय सर्वं जनम वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती पद्मावती। ओम ह्रीं श्रीं ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय आन पूरय सर्व जनम वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती पद्मावती। ओम ह्रीं श्रीं ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय आन पूरय सर्व जनम वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। Allow that to sink in within you. And once it feels like it has traveled from your head into your body, it has slowly gone into that, then you can open your eyes. So somehow I chose to give you the Vashikaran one only. No, I want all these family members to be so bright and so blatant, like people should be, ये क्या है ये सब? Why by looking at him, like we feel, oh wow, we should all have that wow factor, right? कुछ तो होना चाहिए ग्रुप में. We'll have that wow factor that. अच्छा, कितना दिन जाप करना है, क्या करना है, ये बता देता हूं. एक ही दिन करना है.
और सिर्फ 3 माला करना है. Because if you become too much of attractive, then there is a problem. So I want to have a control on that. So फिर कौन सा माल है भाई? कल पता चला कि पूरे लोग आपके घर के चारों तरफ घूम रहे हैं. So only 3 माला. Again the same, कमल गट्टे की माला और स्फटिक माला, or else on finger count. लेकिन 3 माला करें. And this is for only and only for tomorrow. लक्ष्मी पूजन करते हो आप, लक्ष्मी पूजा करने के बाद ये मंत्र जाप पे बैठ जाओ, क्योंकि पूजा का एक समय है, बट फॉर दिस जाप इट्स नॉट बाउंड बाय दैट. ओके, I want to see you more attractive, more blatant, more shining on Wednesday. Okay, so कुछ तो रौनक आनी चाहिए चेहरे पे दिवाली की. So these are, अच्छा संध्या जी, हेल्थ का मंत्र. That's what I said, no, like when we are doing the pujan of Lakshmi Devi, and क्योंकि ये धनतेरस का दिन है और धन्वंतरी ऋषि का पूजन किया जाता है, you people will pull everything, no problem. Okay, close your eyes. You don't have to do the jap. I will do the jap for you. आंख बंद कर लो. बट स्टिल इट इज गुड. धन्वंतरी धनतेरस का दिन है तो धन्वंतरी मंत्र का जाप कर लेते हैं, क्योंकि वही आयुर्वेद और जो रोगों का नाश करने के जो शक्तियां हैं उनके पास हैं. Because Lord Dhanvantari is regarded as the god of Ayurvedic medicine in the Hindu religion. And on this auspicious day, Dhanvantari is prayed to improve their health conditions for themselves and others. And what we will do is, let us not only listen to this prayer for healing of our own selves, but also the healing for others as well. खाली अपने लिए नहीं, अपने परिवार में जो भी हैं, हमारे आस पड़ोस में जो भी हैं, या तो पूरे सृष्टि के लिए कि वो हमारी प्रार्थना स्वीकार करे और सारी सृष्टि के लिए वो आरोग्यता प्रदान करे. So now I chant the Dhanvantari mantra. ओम नमो भगवते महासुदर्शन वसुदेव धन्वंतराय अमृत कलशहस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोगा निवारणाय त्रिलोक्य पठाय त्रिलोक्य निभाय श्री महाविष्णु स्वरूपा श्री धन्वंतरी स्वरूपा श्री 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 औषधाता चक्रा नारायण स्वाहा. ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलशहस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोक्य पाठाय त्रिलोक्य नित्याय श्री महाविष्णु स्वरूपा श्री धन्वंतरी स्वरूपा श्री 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 औषध चक्र नारायण स्वाहा. ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय
अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक्य पाठाय त्रिलोक्य नित्याय श्री महाविष्णु स्वरूपा श्री धन्वंतरी स्वरूपा श्री 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 औषध चक्र नारायण स्वाहा। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोक्य पाठाय त्रिलोक्य नित्याय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपा श्री 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 औषध चक्र नारायण स्वाहा। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोक्य पाठाय श्री त्रिलोक्य नित्याय श्री महाविष्णु स्वरूपा श्री धन्वंतरी स्वरूपा श्री श्री औषध चक्र निवारणाय नारायण स्वाहा। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेव धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक्य पाठाय त्रिलोक्य नित्याय श्री महाविष्णु स्वरूपा श्री धन्वंतरी स्वरूपा श्री 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 औषध चक्र नारायण स्वाहा। So while not only accepting this for our own selves, let this mantra also create the goodness in lives of others as well. Bring peace, happiness into this world and into the entire creation. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. By listening to this mantra itself, you might have noticed what happened to you. If I don't speak, you know what happens within you. ऐसा नहीं लगा कुछ हील हो गया अंदर? There is so calmness within you now. मंत्रों का प्रभाव तो है। चलो, so thank you. Because of you, I was also able to bring some calmness within me. So thank you, everyone. It will be cold and serene within you. The moment you just listen to this mantra, it's like ऐसा लगा कि कहीं से सर्द हवा आने लगी है. And we have just done how many times? 5 times. This has its impact. So shall we do a full day process for him also? कर लो और कर लो. Oh my God. You कितने प्रोसेसेस करोगे? मेरे पास इतने प्रोसेसेस है ना, आप रोज एक एक प्रोसेस दूंगा तो भी खत्म नहीं होगा. But good that you people are doing it so diligently, following it so well. So all that I can say is thank you. Because see, all these processes are there, mantras are there, but who is doing it? We are not yielding the benefits of the proven methods. So at least you people are doing it. Just be there and do it in the right way, not just for your own self. और एक चीज तो मान के चलो, anything that I am going to tell you, anything that you are going to do, it's not only for you. तो हो ही नहीं सकता. Because the basis of everything that we do is not only for the benefit of me, it's the benefit of we.
It's not the benefit of I, is the benefit of us. नहीं तो अगर मैं वैसे सोचने लगा, चंदन कृष्णन जी, I'll keep everything to me only. I said, क्यों जरूरत क्या है, मैं ही आज बैठ के सारे माला गिन लेता हूं. No, it's like, it's like having all the gifts with you, nobody around you. क्या फायदा वो गिफ्ट का? कोई है ही नहीं, आप अकेले बैठ के गिफ्ट रैपर खोल रहे हो. So thank you for being around, and thank you everyone. So the processes, I strongly believe everybody must have taken a note of it, and there are some good people in our, I am so thankful to them. They have written down all the things. Only the mantras I will post. Okay, mantra मैं post कर दूंगा. Please translate into any other languages if you want. Especially अलग-अलग languages में जिनको अगर समझ में नहीं आता, if you want to translate that. These are very, very easy and sattvic mantras. Anyone can do it. So don't restrict to your own self. अगर कोई है आपके जीवन में, if you think like they can benefit out of it, pass them on. We don't need anything. Ask them. We want to give happiness on this Diwali. That's it. हम खुशियां बांटना चाहते हैं. So you please do that. Okay, 2 hands are raised. Okay, so I'll take it fast. Yeah, Revati ji. Pranam Mahadev. Pranam. That you said Dhanteras you can do anytime during the day, right? Today? Which one? Dhanteras का देखो, अगर इवनिंग में करते हो, क्योंकि जनरली धनतेरस की पूजा इवनिंग में होगी, हालांकि धनतेरस का समय कल रात से शुरू हो चुका है. So you can do it, no issues with that. Okay, till late evening, right? Yeah. Okay, thank you. Thank you. Okay. Hima Bindu ji. Mahadev, Pranam Mahadev. Pranam. Our Trayadashi will be ending tomorrow morning by 7:30 a.m. Okay. So how are we supposed to do today, tonight, or tomorrow morning? You do it, if you can do it early morning before that, it's good. If you are not able to do it tonight only, no issues. Because already it is started, no? Okay, then. No problem with that. Okay, then. Okay? Thank you. Fine then. Yes. Okay. But the only thing is, you people have to be very careful with the timing of this Lakshmi Puja, because वो बहुत छोटा आया है इस बार. Tomorrow Puja time, it's around like, I will recheck and I will post it in the group. But as for the house, घर में जो पूजा होती है, तो मैंने कहा था जैसे, it's around like 5:56 से शुरू होके, sorry, 6:57 से शुरू होके 8:16 तक है. In the evening, Indian time. 6:57 p.m. to 8:16 p.m. Let me type that also. 5:57 p.m. Yeah, so Sumaji has posted, you might be able to see that. So from 6:57 to 8:16 p.m. In US, you please check out on the web once. Santoshi ji, then Vani ji, and all the people out there, Shiva Guru ji, Shiv ji, and all those people like Preeti ji and Navni ji, Hima Bindu ji, please check your timings of your local, because you can easily find it online also. Okay, just check the Panchang. Okay, Panchang for Lakshmi Puja in US and your time zones. So it would be easy for you. क्योंकि इंडिया का हमको पता है, लेकिन वो भी अलग अलग है. मतलब गुजरात में एक समय पे है, यहाँ पे एक समय पे है, डाउन साउथ एक समय पे है, उड़ीसा में एक समय पे है. But what is happening is it is coming into the same space only. So not to worry, क्योंकि वही टाइम फ्रेम में ही आ रहा है. Might be here 10 minutes, 15 minutes इधर उधर हो रहा है. Okay, so keep everything ready so that by 7:10 you start and complete it by 8. So you will be anyways completing within that time frame. So wherever you are in India, so no problem with that. लेकिन खाता की जो पूजा करते हैं, especially if you are doing any puja of these notebooks that you keep, उसका समय अलग है, वो एक बार देख लो. वो कहीं पे 4 बजे 4:30 बजे का कुछ है उसमें. ओके, जनेश जी.
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आपने कहा था सूर्य ग्रहण का एक स्पेशल साधना करनी है, तो उसके लिए, क्योंकि वो वेडनेसडे को फिर हम मिलेंगे, उसके पहले पुष्प साधना, आई विल आपने कीप कहा यू था वो पोस्टेड। 10 मिनट का ही उसके अंदर वक्त है, उसके अंदर आपको कर लेनी है, ऐसा नहीं, वो 20 पिछले मिनट संडे चाहिए को अपना। हमको, लेकिन मेरा हाँ, शेड्यूल ऐसा है। आई आप तो एक की पूजा कर लोगे, मेरे को अभी हो गया, आज से मेरा तो शुरू हो गया आज, फिर आई एम नॉट स्लीपिंग तो द आप नेक्स्ट 3 days गॉन। छोटा सा वीडियो बना के पोस्ट कर दीजिए, हम फॉलो कर नहीं लेंगे। होगा, तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो साधना है और वो सिर्फ 20 मिनट में उसकी सिद्धि होती है, वो मेरे रहने से ही होगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण तो आते रहेगा और आई हम भी सी इफ परपेचुअल आई है, कैन मेक आउट कोई सम दिक्कत। टाइम, बट आपसे ज्यादा मैं चाहता हूं कि आप लोगों को वो सिद्धि हो जाए, सो डोंट वरी। ठीक, प्रणाम गुरु। ओके। प्रणाम। आप एक लक्ष्मी की पूजा करके चले जाओगे, हम लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे, अलक्ष्मी की भी पूजा करेंगे, काली की भी पूजा करेंगे, तारा की भी पूजा करेंगे, छिन्नमस्ता की भी पूजा करेंगे, आद्या काली की भी पूजा करेंगे। बाकी ग्रहण है, धन्य हो, चलो। बट देर वॉज ए वेरी गुड क्वेश्चन अदिति जी, आप ये सब इतना क्यों करते हो आप लोगों के लिए? मुझे जरूरत नहीं है। ये जो सब लटके हुए ना बेताल बन के, इनको सब ताल में लाने के लिए मुझे करना पड़ता है। ये कभी कभी आप लोगों को देख के लगता है मैं विक्रम हूं और आप लोग बेताल हो, लटके हुए हो सब, और ये जाने वाले लोग नहीं है। बोले या तो मुक्त करो या तो यही रहो, आइदर यू गिव अस लिबरेशन और यू स्टे हियर। सो इन सारे बेतालों की मुक्ति के लिए हमें करना पड़ता है रोज। वो हावी सीन ना, मृदुल, वो तबला तबला बजाने से पहले वो मार मार के ठीक करता है, वो हमारा हाल कुछ वैसा ही है। टू ब्रिंग देम इनटू ट्यून यू कीप ऑन हिटिंग देम। तबला अपने आप से तो सुधरेगा नहीं, भले ही खूब पड़े लेकिन सुधरेगा नहीं, तो फिर हैमर से भी मारना पड़ता है। यू पीपल आर ग्रेट, दैट्स व्हाई मैं जब आपको देखता हूँ मैं बोला आपके चरण छू लेने चाहिए, कितना कुछ करवा लेते हो। चलो, हम भी धन्य हैं आप लोगों को पाके, हमें भी पता चला कि बेताल होता क्या है। चलो, एनीवेज, आई विश all of you an amazing दिवाली एंड धनतेरस एज वेल। आपके जीवन में जो भी प्रक्रियाएं कर रहे हो उससे आपको अनेक फल मिले, लाइक इट शुड मल्टीफोल्ड इन योर लाइफ। May we all live in such a way that people, when they look at us, they believe that there is a place called as heaven. It's not just something that people have read, but by looking at you, the way you are, not because of the space that you are in, not because of the place that you are in, not because of what is happening in your life, but just by looking at you, they should feel, they should experience what heaven should be. Despite all the impossibilities, all the insecurities, all the imposters in our life, still how happy this person can be. And I believe that's what I'm working towards you. क्योंकि लेके तो जाऊंगा, वापस तो नहीं आओगे, लेकिन जब यहां हो, till you are here, people should look at you and should always be amazed, like how beautifully these people live. बाकी जहां हैमरिंग। So thank you everyone, wishing you a beautiful, prosperous, happy, safe Diwali, and may your lives be filled with happiness, wealth, name, fame, whatever you have wished for.
because somebody said some beautiful thing just a day before yesterday. I went to a college, he said a very beautiful thing. He said, people talk about big. I want a big car, I want a big house, I want a big name. Think big, right? But do you know what that big is? This is a little gift for you, little bit of assortment for you all. Big means believe in God. Think big, think and believe in God. Big car, believe in God, a good car will come to you. Big, believe in God, you have a best life, big life, right? So I believe that was so beautiful out there. So may you have a big Diwali. Believe in God and believe in God wala Diwali hona chahiye aapka. Thank you everyone. And I believe, Haribhai, are you there? I'm not sure he is around because his photo is still there, but I'm not sure he is there or not because he has given me the rights out there. So thank you everyone. And please do the processes, and somebody must have posted it. I will just check, and I will post the mantras both in writing as well as I will record that and post it. Okay. So until we meet next, stay gorgeous, stay God, think big, and enjoy this festive season. Meet you on Wednesday. Haribhai is there, but he's doing something from his phone, I believe. Okay. Thank you, everyone. No sound, Haribhai, no sound. This time you need to excuse me. Actually, I'm doing one more session on the computer. So have a good day. Happy Diwali. Happy Dhanteras to all. Thank you. Thank you. Thank you, Manash bhai. Thank you.